इसको नमस्कार। नमस्ते मनोज भाई। जय श्रीमान। इसको लाइव कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं। मोनिका जी, आर वी लाइव नाउ? जी सर। नमस्कार। श्री अरविंद के जन्म के 150वें वर्ष में ऑनलाइन कार्यक्रमों की श्रृंखला में ये जो हमारा वर्तमान वेबिनार चल रहा है, इसका विषय है समग्र प्रबंधन। और इसमें जैसा कि आप लोगों ने कल भी देखा होगा, हमारे दोनों विद्वान वक्ता श्रीनिवास जी हैदराबाद से और श्री अरुण व्यास जो नोएडा से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत कुशलता के साथ इसमें अपने अपने विषयों को रखा। आज इसका दूसरा दिवस है। इस कार्यक्रम का जो सह आयोजन है वो श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र और श्री अरविंद सोसाइटी श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा के द्वारा किया जाता है। और ये इस माह की जो हमारी वेबिनार है वो समग्र प्रबंधन पर है, और उस विषय को लेकर आज हम फिर उपस्थित हैं। और हम कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले हम लोग श्री माता जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मातृ संगीत प्ले करेंगे मोनिका जी? जी सर। Shri Arvind
जैसा कि आप सबको विदित है कि कल श्रीयुक्त श्रीनिवास जी ने जो विषय लिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप बाय कॉन्शियसनेस, और इसी विषय का प्रवर्तन आज वो और विस्तार से करेंगे। चेतना का क्या रोल है, क्या महत्व है, क्या भूमिका है एक सच्चे नेतृत्व को विकसित करने में, और वो इसके विभिन्न पहलुओं को आज हमारे सामने रखेंगे। तो मैं इसके पहले क्यों ना आमंत्रित करूं, मैं एक बार फिर उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हमारे आज श्रोता कुछ नए जुड़े होंगे। श्रीनिवास जी जो है श्री अरविंदो सोसाइटी का जो हमारी राज्य समिति है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उसके हमारे राज्य समिति के प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, और उन्होंने अब भी पूरी तरह श्री माँ की सेवा करने के लिए अपना जो व्यावसायिक कार्य है उसको तिलांजलि देकर अब श्री माँ की सेवा में कार्य में लगे हैं। इसके पहले लगभग 18 वर्ष तक उन्होंने वैश्विक स्तर की बड़ी कंपनियां जैसे नोकिया, सिस्को और दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें उन्होंने टेलीकॉम के एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल के रूप में काम किया है। नोकिया सीमेंस का जो इंटरनेट बिजनेस यूनिट है उसके हेड के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, लेकिन उनके भीतर की जो आध्यात्मिक प्यास है, आध्यात्मिक कार्य के प्रति जो रुचि है, वो उनको उस जगत से खींच के ले आई। जहाँ तक उनकी शैक्षिक योग्यता की बात है तो उन्होंने MBA किया है और MS किया है, जो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी है USA की, उससे। इसके अलावा अभी हाल ही में उनके भीतर का जो विद्यार्थी भाव है तो वो सुप्त नहीं हुआ, और उन्होंने MA में फिलोसफी में MA उन्होंने किया उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से कुछ ही वर्ष पहले। 1980 से वे श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और जो अभी तक हमारा साफिन श्री अरविंदो फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रल मैनेजमेंट, वो संस्था के हेड के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। मैं आज उन्हें फिर यहाँ आप सबकी ओर से आमंत्रित करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ कि वे आए और विस्तार से इस विषय को, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप बाय कॉन्शियसनेस, जब कोई चेतना के द्वारा कोई हमें ऐसा व्यक्ति, सच्चा नेता प्राप्त होता है जो अपने स्वयं का प्रबंधन और अपने भीतर की सत्ता को अपनी चेतना के माध्यम से बांध के रखता है, तो उसका केवल संगठन को नहीं, सारे परिवेश को, सारे देश को, समाज को, सारी पृथ्वी को लाभ मिलता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी वार्ता प्रारंभ करें। श्रीनिवास जी, स्वागत है। थैंक यू मनोज भाई। I welcome you all again for the session today on leadership by consciousness. यहाँ आज जो लोग आए हुए हैं वो सब श्री अरविंद के भक्त हैं। कई थीम्स जो हम मैनेजमेंट में आज डिस्कस करेंगे वो आप सब उन विषयों से थोड़ा बहुत परिचित तो होंगे ही। प्रयास रही है श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से, जब हम कंपनीज में जाते हैं, उनके लीडरशिप और मैनेजमेंट से बात करते हैं, उनको इस विषय को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी ट्रेनिंग्स हम देते हैं काम को आगे बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को जनरेट करने के लिए, टीम वर्क को एनकरेज करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, मोस्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग्स ये जो हम करते हैं, they try to modify the behavior based on the mental understanding. एक मानसिक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, और ये थोड़ा बहुत रिजल्ट्स भी देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म चेंज, जो एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं,
तो वो सिर्फ चेतना के उभरने से ही हो सकता है। ये बात हम समझाने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम श्री अरबिंदो के जो अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, अलग अलग इंसाइट्स है, श्री मां के टीचिंग्स है, इनको हम ले जाते हैं। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन में चेंज, हाँ हो सकता है हम जब यूथ कैंप्स कर रहे हैं, हो सकता है जब हम स्कूल में पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, यही थीम्स अलग अलग उदाहरण के साथ हम आगे ले जाते हैं। तो आज आपको ये देखने को मिलेगा कि हम श्री मां और श्री अरविंद की वाणी को बिजनेस डोमेन में, लीडरशिप में, मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कैसे हम प्रस्तुत करते हैं, ताकि ये मैसेज उनको समझ में आए और धीरे धीरे उसके साथ ही लोगों का परिवर्तन भी शुरू हो। और जब हम चेतना की बात करते हैं तो हमारी ये एक्सपीरियंस रही है, हमारा ये अनुभव रहा है। इनफैक्ट ये वर्कशॉप होने के बाद अक्सर जब फीडबैक आता है तो उसमें बहुत कॉर्पोरेट रिलेटेड, जॉब रिलेटेड इनपुट्स भी मिल जाते हैं, फीडबैक भी मिल जाता है, और अक्सर हमको पर्सनल फीडबैक भी मिल जाता है। देखिए वर्कशॉप जब हमने चेन्नई में किया था, एक IAS ऑफिसर मौजूद थे हमारे साथ, 40-50 एजुकेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद थे। उसमें एक फीडबैक मुझे याद है, एक लेडी ने लिखा था कि आई एम गोइंग टू गो बैक एंड वर्क ऑन माई रिलेशनशिप विथ माई डॉटर बेस्ड ऑन योर टीचिंग्स। और हम यहाँ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि चेतना के स्तर पर जब आ जाते हैं तो आउटर और इनर का एक ब्रिज बनना जरूरी है। और जब तक ये टीचिंग हम अप्लाई नहीं करते हैं, और जब हम अंदर अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो फैमिली में भी इफेक्ट आ जाता है, फ्रेंडशिप में भी इफेक्ट हो जाता है, वर्क में भी इफेक्ट आ जाती है। And we have been fortunate to work with many people who have felt that ये जो मैसेज हम ले जाते हैं, it is adding value to them. कल हमने 2-3 important topics टच किए थे. I'll just recap them once before we proceed further. एक चीज तो कल हमने बात किया था कि अक्सर जब हम NGOs में या आध्यात्मिक संस्थाओं में, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, तो एक कॉन्ट्रास्ट ड्रा करते हैं, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की या सोशल सर्विस वर्ल्ड की। एंड समहाउ द वर्ड कॉर्पोरेट इज ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाकी चीजों में हमको थोड़ा एक ओपिनियन रहता है कि अक्सर यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा है, यहाँ पे सेंसिटिविटी कम है, यहाँ पे बहुत कठिन तरीके से व्यवहार किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। I would like to share with you that having been in the corporate में almost 20 साल गुजार के, अभी almost 10 साल के ऊपर हो गया है, जहां मैंने पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के श्री अरविंद सोसाइटी के माध्यम से मां और श्री अरविंद की सेवा कर रहा हूं। दोनों देखने के बाद लगता है both the fields have a lot to learn from each other. On one side, we have to change our own perception of the corporate world, that today many organizations take up holistic human values, development of the individual, consideration to the family of the individual. All of this, ये सब चीजें जो है, एक holistic view of the individual आजकल corporates ने लेना शुरू किया है। ये employee training की तरफ से ही नहीं, अगर आप थोड़ा Google सर्च करेंगे, आपको मिलेगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ कैसे करें। माइंडफुलनेस मतलब जागरूकता, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस, कंटिन्यूअस अवेयरनेस, उसके साथ हम काम कैसे करें। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। ट्विटर के जो हेड है टिल रिसेंटली, जैक डॉर्सा, वो कहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे मेडिटेशन करता हूं। बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स मेडिटेशन और विपासना में आस्था रखते हैं, तो वहां पे एक परिवर्तन आ रहा है। और दूसरी तरफ से, इफ आई मे टेक द लिबर्टी,
सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में there is a lot to learn from the corporate world. The sense of perfection with which a corporate world works is exemplary in most cases. A sense of time-bound activity that we take up मुझे बहुत कम दिखने को मिलता है जब मैं NGOs में, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता हूँ. एक सेंस ऑफ ओनरशिप कि जब मैं एक काम के लिए मेरा नाम दरखास्त कर लिया है तो वो काम मैं परफेक्शन के साथ करके उसी टाइमलाइन में कर दूंगा. ये चीजें एक्चुअली मैं अक्सर मिस करता हूं जब मैं यहाँ काम करता हूँ या एनजीओस के साथ काम करता हूँ. एक डर रहता है कि क्या ये टाइम पे हो जाएगा, विल दिस पर्सन डिलीवर ऑन टाइम, और अक्सर दैट इज समथिंग वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ गैप. एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी मैं अक्सर देखता हूं कि वो ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो सकती है हमारी संस्था में भी. माफ कीजिए, मैं ओपनली इसलिए कह रहा हूं कि आप सब भी अलग अलग ब्रांचेस और सेंटर से आए हैं और ये सब मैं हमारे बेनिफिट के लिए कह रहा हूं, क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव थिंग्स टू लर्न, वी हैव थिंग्स टू इंप्रूव, एंड नोबडी कैन से दैट वी हैव अराइव्ड एट परफेक्शन. तो अगर मेरे गुरु बंधु के साथ मैं शेयर नहीं करूंगा तो बाकी दूसरों के साथ शेयर करके मुझे क्या फायदा मिलेगा. हम सब एक ही जर्नी में है, एक ही पथ पर है. तो ऑनेस्टली वी हैव टू शेयर दीज थिंग्स. सो this is something I had shared briefly yesterday also, or hopefully this feedback will be good for all of us to raise our quality of work. उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि अक्सर हम हमारे ब्रांचेस और सेंटर्स का काम को 4 दर्शन डे और 1 जनवरी 1 तक सीमित कर दिया है. तो उसके 150th की ये श्री अरविंदो की बर्थ एनिवर्सरी से हम एक स्फूर्ति लें कि हमारी प्रेजेंट वर्क को प्रिजर्व करना, प्रेजेंट सावित्री, लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस, ये सब पढ़ना, दिस इज गुड फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी इन द सिस्टम, और उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, रेगुलर टॉक्स रखना. लेकिन इसके साथ साथ प्रोपगेशन बहुत जरूरी है. वो सेकेंड पीक को हमने छोड़ दिया है बहुत सारे ब्रांचेस और सेंटर्स में. हम इतना एफर्ट प्रोपगेशन पर नहीं कर रहे हैं जितना शायद हमको करने का मौका है. और ये 150th सेंटिनरी और एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में हम एक डेडिकेटेड कमिटमेंट करें हमारे गुरुओं के लिए कि हम प्रोपगेशन और एग्रेसिवली करें. एग्रेसिव का मतलब ये है कि हम इतना तो बता दें जो आध्यात्मिक सोल्स हैं, जो हु आर सीकिंग दैट श्री अरबिंदो एंड मदर एग्जिस्ट. हमको किसी को कन्वर्ट करने का या वो सब तो हम जाते भी नहीं है उस तरफ, बट अवेयरनेस ऑफ श्री अरबिंदो एंड मदर, उसको प्रोपगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बैकग्राउंड के साथ मैं आज के टॉपिक पे आता हूं, विच इज लीडरशिप बाय कॉन्शियसनेस. कल हमने देखा था कि लीडरशिप बाय कॉन्शियसनेस किस तरह जरूरी है और किस तरह इसका इंपॉर्टेंस हम जान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं. अलग अलग बिजनेस लीडर्स का एग्जाम्पल दिया गया था. उसके साथ साथ अभी हम विषय के डिटेल में जाएंगे. And like I said, many of you are familiar with some of these themes, but I still think that you would probably benefit to see how we are communicating it to the business world. So I'll just share the screen with you. PowerPoint के माध्यम से ही आज का most of the talk होगा. अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप comments में डाल दीजिए, वो पहुंच जाएंगे, और मनोज भाई, myself, we will all look out for it. You may kindly let me know once you can see the screen. हाँ भैया, दिख रहा है अच्छे से. बढ़िया, थैंक यू. So, leadership by consciousness, we will take it up. तो एक है कि when we talk to the corporate world, we need to speak their language also at times. And some of the basic beginning slides I'm showing you here. कि what is leadership? और जब आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग वर्ड्स आ जाते हैं. Leadership is about motivating others, leadership is about management, leadership is about skill development, leadership is about a lot of things. तो इसके 2-3 बेसिक एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं. These are from thought leaders in this field. Leadership
is the ability to influence others with or without authority. In fact, this particular definition जो है, ये हमारे लिए बहुत important है, क्योंकि जब हम एक आध्यात्मिक संस्था में काम करते हैं, हमारी लीडरशिप एक पावर और पोजीशन से नहीं आती है. To simply put, in our organization, our leadership comes probably from our own level of consciousness. And the ability to influence others with or without authority. जब हम उस लेवल से काम करना शुरू करते हैं कि हमारी चेतना एक स्तर पर है जहां से हम एक लव, डिवोशन, डेडिकेशन, सेल्फलेसनेस, एक साइकिक वैल्यूज, इन सब के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो इट इज नेचुरल एंड ऑटोमेटिक दैट हमारे जो भाई बंधु हैं हमारे संस्था में, वो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, हमारे साथ काम करना चाहेंगे. एंड दिस आई हैव पुट इन द वेरी टॉप बिकॉज इट इज द मोस्ट रेलेवेंट to us, with or without authority. Then we get into more detailed leadership definitions. एक है कि हम ये समझें कि पहले हमारी क्या काबिलियत है, knowing yourself, having a vision, हमारा क्या विजन है, हम क्या कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस विजन को बाकी लोगों के साथ हम शेयर करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, और एक ट्रस्ट जरूरी है ताकि वो हमारे साथ जुड़कर काम करें. और उसके बाद ये सब करने के बाद एक इफेक्टिव एक्शन भी जरूरी है जो हमारे विजन को फुलफिल करे. दिस इज अनदर डेफिनेशन. पीटर ड्रकर इज अ वेरी वेल नोन नेम and he is considered as the god of management for almost 30 years, from 19 almost 60s, maybe even 50 years. 1960s से लेकर almost 2000 तक उन्होंने बहुत सारा इन्फ्लुएंस किया है द फील्ड ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. वो कहते हैं लीडरशिप इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अलाइन द स्ट्रेंथ्स टुवर्ड्स अ पर्पस इन सच अ वे दैट द वीकनेसेस बिकम इररिलेवेंट. Ability to recognize and align our strengths in such a way that our weaknesses become irrelevant. हम जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, अक्सर ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होता है. जब हम ब्रांचेस और सेंटर्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे लगभग 280 ब्रांचेस और सेंटर्स हैं कुल मिलाकर. उसमें शायद 200 या 250 ऐसे ब्रांचेस और सेंटर्स हैं जहां पे काम सिर्फ 4 लोगों की वजह से चल रहा है. हो सकता है कमिटी में 12 लोग हो सकता है आपको अगस्त 15 में 100 लोग भी आए, लेकिन काम तो सिर्फ 3-4 लोगों का होता है जो वहां पे डट कर लगे रहते हैं. दे जस्ट देयर एंड द कांस्टेंट एफर्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल इज कि ठीक है हमारे पास रिसोर्सेस कम ही है, लेकिन हम काम चालू रखेंगे और आगे चलते रहेंगे. A way to remove the thought that हमारे weaknesses हमारे काम को कंस्ट्रेन करते हैं, उसको हटाकर हमारे विजन को कैसे अचीव करना चाहिए, अक्सर ये जानना और इस तरह से चलना बहुत जरूरी है. So this is the organizational definitions of how a leader should be. एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है जब हम लीडरशिप की बात करते हैं कि आर लीडर्स बॉर्न और मेड. मतलब जब हम बड़े लीडर्स को देखते हैं, चाहे वो हमारे हिस्ट्री को लेकर महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, आज when we talk of big leaders, या विश्वेश्वरैया हो जो टेक्निकल लीडरशिप हमको दिखाया था उन्होंने, जो शास्त्री जी हो, when you talk about all of them, are they born or are they made? मतलब एक पैदाइश के साथ ही ऐसे क्वालिटीज आते हैं जिसको बस वो लीडर बना देते हैं उस आदमी, उनके बराबर कोई और नहीं बन सकता है. This is a debate that is there when we talk about leadership, and there is a lot of research material that goes on. I will just share with you the results.
around say that leaders are born, around 19% say that leaders can be made, and around 50%, 52% say that it is both. So it is possible to identify leadership traits and learn and emulate them so that we are able to grow into leaders. And in our case, it is probably far simpler because we hang on to the teachings of Mother and Sri Aurobindo and bring in the necessary sincerity and conviction to take the work forward. Leaders सिर्फ वो नहीं है जो नेशनल लेवल पे विजिबल है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो भी लीडर्स हैं जो छोटे छोटे सेंटर्स को विदाउट फेल चला रहे हैं क्वाइटली, कीपिंग द हेड डाउन एंड कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इट. कर्नाटका में एक रूरल सेंटर है जहां से मैं कुछ लोगों से मिला हूं. In a village of 5,000 population, they have recently constructed a school. And the cost of building the school was 1 crore. And this small team of 7 or 8 people started raising funds and they successfully raised 1 crore and they built a school. And they are not in any big metro city. They are not in Hyderabad. They are not in Bangalore. They are not in Delhi, Bombay. They are in this small village in Karnataka. This is unfailing leadership. This is fantastic leadership. और ऐसे कई लोग हैं जो हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं जो क्वाइटली माँ और श्री अरविंद के चरण स्पर्श करते 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 आगे बढ़ गए. बस. Another area which comes from a certain research. This research was published in Harvard Business Review. और business line में Harvard Business Review एक बहुत जानी मानी publication है. Decades people have been reading it, and many pioneering theories and groundbreaking research is shared in Harvard Business Review. एक ये गोलमैन मॉडल बोल के लीडरशिप का एक उन्होंने आइडिया दिया है. There are different styles of leadership. एक authoritative leadership है जहां पे the person is clearly tells you what to do and how to do it. एक affiliative leadership है जहां पे वो हमारे स्ट्रेंथ्स को भी उनके स्ट्रेंथ्स के साथ जोड़ के आगे बढ़ाते हैं. एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप अप्रोच होता है जहां पे वी हैव डिस्कशंस एंड ट्राई टू टेक डिसीजंस. एक कोयर्सिव लीडरशिप है. कोयर्सिव का मतलब सप्रेस करना, दबाना या लोगों से किसी तरह जबरदस्ती काम निकालना. दिस इज अ कोयर्सिव लीडरशिप. और एक पेस सेटिंग लीडरशिप है जो ऐसे लीडर्स हैं जो 18 घंटे दिन में काम करते हैं और दे एक्सपेक्ट एवरीबॉडी एल्स टू फॉलो. और एक कोचिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जहां पे हम अक्सर हमारे जूनियर्स को आगे बढ़ाने के प्रयास में जुड़े रहते हैं और वी आर कॉन्स्टेंटली कोचिंग देम एंड ट्राइंग टू आल्सो इंप्रूव देम एंड देन टेक द वर्क फॉरवर्ड. दीज आर अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स है. मैं सिर्फ आपके जानने के लिए यहाँ रखा हूँ. दिस इज नॉट द मेन सब्जेक्ट फॉर Sri Aurobindo ऑडियंस, बट आई एम गिविंग यू अ फ्लेवर because normally when we do a workshop on each of these slides there are another 5-7 slides behind. इसका मटेरियल बहुत डिटेल्ड है और हमको कम से कम 15-20 मिनट एक एक टॉपिक पे लगाते हैं. बट आई एम क्विकली गिविंग यू अ फ्लेवर ऑफ व्हाट आर द टॉपिक्स वी कवर. अभी तक हमने ये देखा है कि लीडर्स किस तरह होने चाहिए और लीडरशिप किस तरह होनी चाहिए. अब this particular result, it is based on a survey of probably 50-60 companies across 20 countries. Employees क्या चाहते हैं leaders से? What do you expect out of employees? एक ethical और moral standing चाहते हैं. 67%. This was the top. एक क्लियर नैतिक स्टैंडर्ड होना जरूरी है अगर आपको एक लीडर बनना है. और एम्प्लॉइज ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर्स से कि वो मिसलीड ना करें. बाकी चीजें तो है ही, बट एक दे स्टैंड अप टू अ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज. एंड दिस इज समथिंग आई विश टू एम्फसाइज हियर. इट इज टेकन सीरियसली बोथ इन corporate life of multinational companies. I have seen it. And you will be surprised, even political life of many Western democracies.
while allegations of corruptions are there, but if anyone is proven, if we go back and see the newspapers in the last 10 years, senior politicians have been sent to jail or they have been forced to resign based on the violation of ethical and moral standards. इस लेवल पर इंडिया अभी पहुंचा नहीं है, क्योंकि हमको उनको कन्विक्ट करने में 20 साल लग जाते हैं, तब तक वो रहे ना रहे, और रिजाइन करना तो बहुत ही कम देखते हैं करप्शन चार्जेस पे. बट दिस इज समथिंग that is more visible in the Western democratic setup and also in the Western corporate setup. In Indian setup, it is not yet as clear. And aksar, we have seen people just get transferred into other divisions and things like that. Few areas where I have seen personally people getting fired for unethical behavior and immoral activities. So if we go by the top 5 desired traits for leaders, what are the employees expecting out of leaders? Ethical or moral standards, a clear goal, path and guidance. मतलब एक clarity होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, how do we get there, and what is the general guidance in the process. Similarly, clear communication, a level of flexibility without ego, and team development also. Now, yesterday we spoke about leadership by consciousness. And while we discussed what is leadership as a definition, what are the different kinds of leaders, and what are the values expected of leaders, वहां तक वो leadership का एक introductory module है जो normally हमको it takes about 2.5 hours, but I've just given you a flavor because that is not the main topic of interest of the audience today. We will come to basically, when we are talking of leadership by consciousness, how do we raise our consciousness? एक 5-step methodology हमने define किया है. It starts with self-observation and trying to develop a certain capacity to understand कि हमारी क्या strengths और क्या weaknesses है based on our behavior. So this is the inner awareness path. एक जागरूकता जरूरी है कि where do we stand, and धीरे धीरे एक बार हमारी जो स्तर है वो हम पहचानेंगे, हमारे स्ट्रेंथ्स हमारे वीकनेसेस हम पहचानना शुरू करेंगे, फिर हम प्रगति की ओर किस तरह चलें, क्या क्या स्टेप्स है इसमें. डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट आएगा, सेल्फ मास्टरी आएगा और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. What we have done is, when we talk about the first couple of steps, we go back to consciousness from the point of view predominantly of vital and mental. So that is the progress we make to become aware. And what we also do, which we will not do here today, is we have questionnaires that we distribute that allow people to evaluate themselves as to what their emotional quotient is, how is their capacity to handle stress, how is their capacity to handle conflict, and then we point out where are the difficulties. Today we will not be doing those questionnaires, but this will give you a framework of how we have developed this content. So let us come to the basic framework of physical, vital, mental, and spiritual. Physical, emotional, mental, and spiritual. In this framework, naturally, when we talk to the audience, the focus is on physical awareness in terms of understanding what is the temperament that you have at the physical plane. Are you a morning person? Are you an evening person? Are you somebody whose energies peak in the middle of the day? What is your energy cycle?
are you able to recognize it? And would you like to change it, or would you like to continue with it? And if you would like to change it, how do you align it to your work environment? Because aksar work environment, just because I want to be a morning person, I get up at 4 o'clock and sending emails in the morning, nobody will respond. At the same time, many organizations, we end up having long hours, and some of the people who are naturally morning people find it very difficult to be productive at 7:30 in the evening. So trying to recognize this and trying to understand how does one work. And of course, the other things we talk about here is food and sleep and exercise. These three are very important, as we are all aware. तो ये व्यायाम का किस तरह से हम हफ्ते में कम से कम 3-4 बार करना जरूरी है, and how do we make it happen. उसके अलावा how do we handle health conditions, how do we handle stress, and though we don't take up meditation here, we kind of give an idea that stress management के लिए sleep and meditation are very important, and how do we work it out. So these are the themes we take up when we talk about the physical. Going to the mental, the idea is that a definition of mind being associated with thoughts, ideas, discrimination, cognition, and intelligence. These are actually phrases we have taken out of Sri Aurobindo's description and definition. And it captures a very diverse aspects of what we associate as the mind. Because normally we think of thoughts and ideas, and that's where it stops. But एक level में discrimination, the ability to separate right and wrong, the ability to understand what is going on, cognition, intelligence, all of these are also definitions given by Sri Aurobindo. Now, if we have the inclination, we can try to solve this puzzle as to how does it total up to 15. And this is an exercise we do in a group. I doubt you would all have pens and pencils and books ready, but we actually make them do this exercise. कि this particular grid में आप digits 1 to 9 ऐसे डालिए कि total किसी भी direction में 15 आ जाए. And people take 3 minutes, 4 minutes to try and arrive at the solution. And it is not very difficult. One of the answers, there are many answers possible. One of the answers is given here. And what we tell them is, after they do it, we tell them now, just close your eyes and observe which part of your body was most of your energy focused on when you were doing this exercise. आपके जो शरीर में जो ऊर्जा है उसका प्रवाह कहाँ ज्यादा था जब आप ये मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे. अक्सर क्या होता है, we all know the answer to that mostly it is this part of the body. And we are trying to draw the attention to the fact that when your mind is active, most of your energies are associated in the upper third of your body. Why is this important? It is important to realize that subconsciously we are spending most of our day in this region of the body. We are actually not aware of the bottom third of the body most of the day. Maybe even bottom 2/3 of the body. Most people don't even realize this aspect till they actually are pointed, somebody points it out to them. In terms of what happens, it's very simple. The way our mind works, we have a certain set of perceptions. Anubhuti hoti hai ki, through our 5 senses we perceive the world, and then this perception क्या करता है, it will हमारी mind को प्रभावित करता है. So I walk by a popcorn or an ice cream parlor or an ice cream shop. कहीं से वो
response आ जाता है, and then it starts influencing the mind. फिर क्या होता है? There is a pratikriya in the process, and then of course there is the process of eating the ice cream. This particular slide we also use it for youth also. In fact, एक तरह से it is a certain detailed analysis of how our mind operates and trying to make people conscious of it. Otherwise, all of this happens from top to bottom, all of this happens within a millisecond. We don't even realize. And of course, those of us who are more on studying the yoga part, we know that we have to focus on the influencing and the reaction. Finally, this is what yoga is all about. किस तरह से बाहरी दुनिया को हमारे पर एक असर डालने से थोड़ा रोका जाए, और अगर if we also have a sense of perception, how do we stop the reaction part? And this is where the discrimination comes that Sri Aurobindo mentioned. Vichar, Viveka, all of this come here. In a way, if you see, this slide is actually the teaching of Sanatan Dharma put in a modern form. Vichara, Viveka, Vairagya. How do we implement it? How do we know it? But we are trying to take it to the youth in the modern parlance. There are some numbers that we also share. Some of you may be familiar with it. The number of thoughts a person's mind processes in a day is close to 63,000 thoughts. Does anyone know how many thoughts do we have? How many seconds do we have in a day? Anybody wants to respond? How many thoughts do we process? How many seconds do we have in a day? Around 85,000, 86,000, something like that. So you can understand, हमारी जो मन है, वो 63,000 thoughts it is processing in about 86,000 seconds. I'm talking of the time that we are awake. Continuously, the mind is operating without any control from us. Many people are surprised when we point out that almost every waking second you have a new thought in your mind. And when you're angry, when you're agitated, the thoughts increase. And what is sad is 80% of these thoughts repeat from one day to the other. Matlab, it's like recycled garbage. Based on our pravritti, based on our vasanas, based on our temperament, we keep processing the same thoughts again and again. And many people are surprised that their own mind is so much out of their control. Can anyone guess what is this 8.25? Anyone? .25 is the number of seconds that a human being is able to concentrate nowadays. What we call attention span. The attention span of an average human is 8.25 seconds, not minutes. Students are particularly surprised to hear this. So it gives us an idea. I'll just quickly run through the remaining. The number of emails that a person gets nowadays, 30 per hour. The number of times people unlock their mobile phone during the day. If you're awake for, let us say, 12 to 14 hours, people are unlocking their mobile phone over 80 times. Which is every 10 minutes, people are looking at their mobile phone. जब इतना हम mobile phone को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, it is only natural that our attention span goes down, isn't it? So these are some of the statistics that we share with people about how the attention span is going down, how our mind is a mess.
And now we ask the business leaders, now we ask the employees of the organization, tell me, with mind being out of control with 63,000 thoughts, with your attention span being 8 seconds, with you unlocking your mobile phone every 10 minutes, do you think your mind is capable of making important decisions? It is like trying to ride a bicycle in a fish market. You're trying to focus on a business problem. You're trying to take a decision. You're trying to come up with a design. You're trying to write something very, very important as a documentation for your organization. You are trying to look at resumes and see whom to hire and whom not to hire. You are using a tool called the mind, which is completely out of your own control. जब हमने वो 5-step methodology का बात किया था, this slide addresses the first step, self observation. पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी मानसिक स्थिति क्या है, क्या हो रहा है हमारे मन के अंदर. ये हो रहा है. When you observe, you are living in a fish market. Now you have to develop an awareness. Oh, I am living in a fish market. Now what do I do about it? So this is the result of observation when we observe how our mind is working. And then we talk about how to go forward. First step, observation, observe the thoughts come and go. Observe the thinking, don't flow with the thoughts. And more importantly, observe your patterns. Same thoughts keep repeating over and over. कोई ऐसे बात कहेगा तो आपको गुस्सा आ जाता है, कोई ऐसी बात कहेगा तो आपको बहुत अच्छा लगता है. Understand the weaknesses, the anger points, the push buttons in our nature. This is the first thing. Then detachment. I am not the thoughts. I am separate from the thoughts. I can step back and detach from the thoughts. आप पहचान जाएंगे ये सब माँ के और श्री अरविंद के teachings हैं. And third step is control. Developing equanimity is the key. Using willpower to decide to not think about some things. I can control the course of flow of thoughts. This is a methodology and a model given by Sri Aurobindo in Synthesis of Yoga. He clearly talks about observation, detachment, and control. This is the medicine for how to move from self-observation to self-awareness and then to other steps. From inner awareness to inner progress. So you will see as we go further, a similar prescription also given for the emotions part. So again, we talk about emotions, we walk through. You are familiar with most of this material, so we try not to take too much time. And then we talk about all sorts of negative emotions. And one of the things we point out is what Sri Aurobindo says, that all weakness is strength hiding itself from its own vision. We don't get into this concept of judgment of good and bad, right and wrong, sin and virtue, looking up on one thing, looking down on another. We try to point out this is a contextual evolution that is happening. And many of these things, when office politics happens, when jealousy comes in, when anger comes in meetings, all of these things are a part of our development. So it is not that you're good or bad. We tie this back also to the different styles of management and point out that some of them need to be curtailed. And again, we go back to the same prescription. I will not repeat it. We do talk about noticing which regions of the body the emotions are, mostly from the throat to the navel. And then again, we bring back discrimination and willpower and equanimity. One of the things we have also done is over time, we have developed, we have developed questionnaires on equanimity and willpower and many other topics. In fact, like I shared with you the other day, we even have a module on intuitive decision-making process. So even there, we have an intuition
how do you measure your intuition? And we give them a questionnaire. So these are all questionnaires that we work with. Analyzing our emotional behavior. What was your last ego problem you had at work? And again, we can ask these same questions in our own organization, in our own positions. Are you proud of your response when you think about it now? What would you do differently? Again, the last argument we had at work or home, what is the typical behavior? The important part here is to observe the patterns and break the patterns. मित्रों, हम सब साधना के मार्ग पर है और ये pattern observation is one of the most important parts of changing one's nature. ये सब आप जानते हैं. तो ये patterns अगर हम नहीं नोटिस करेंगे, और हमारे बंधु में भी ऐसे भी लोग हैं जो 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 सालों तक नोटिस नहीं करते हैं अपने बिहेवियर पैटर्न को. Unless we learn to observe our behavior pattern, it is very difficult to say that we are growing in our line of sadhana or we are growing as human beings. मुझे कहते हुए दुख होता है कि मैं कुछ लोगों के साथ 10 साल से काम कर रहा हूं जो मुझसे बड़े भी हैं, लेकिन प्रेडिक्टेबल पैटर्न वही चलते रहता है, whether it is affairs of finance in the branches or whether it is affairs of management. Unless there is a certain change of the patterns over a period of time, the change in the organization is very difficult. And we all have to keep introspecting. एक बार प्रदीप भाई के पास उनके टेबल पर एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास था. उन्होंने, he said to one of my friends, our whole work is to look at ourselves through the magnifying glass morning to evening. कितनी सुंदर बात कही उन्होंने. Keep on examining कि भाई क्या behavior में क्या patterns emerge कर रहे हैं. So anyway, we'll keep going further. We talked about, among these 4, we talked about physical, we talked about emotional, we talked about mental, but here now we are talking about the spiritual self. This is a very delicate subject. In fact, when we do it for public organizations or private organizations, aksar there is a mix of various religious people from various religious background. And people are very nervous when you talk about spiritual self. So anyway, we bring together the 3 dimensions of spiritual growth: the heightening, the deepening, and the widening. This is something all of you would recognize. This framework is something you see in Sri Aurobindo in many places. I will give you the terms with which you can recognize very easily: individual, universal, transcendental. Psychic transformation, spiritual transformation, supramental transformation. The deepening is the psychic element, the individual element. The widening is the universal element. It is the spiritual transformation part. The heightening, going through the higher mind, the silent mind, the higher mind, and the other layers, the spiritual transformation. We have tried to bring it in a way that people are able to realize and recognize and relate that yes, ये जो कह रहे हैं इसको I can apply it to myself. मेरी growth के लिए, मेरी spiritual growth के लिए ये काम आएगा. So now we take up the deepening part. Heart is the center of emotion. If we are silent inside, our heart center can guide us rightly most of the time.
talking about listening to the psychic voice. The center of conscience tells us right from wrong. And if we listen, the guidance becomes stronger. जैसे माँ कहती है ना, psychic being को अगर आप जानना चाहेंगे, you want to develop closer and closer equation, then learn to listen to the whisper of the psychic being. We point out here that जो भी scams होते हैं corporate world में, वो अनजाने में और accidentally नहीं होते हैं. जो आदमी या जो ग्रुप वो स्कैम्स कर रहे हैं, वो जरूर जानते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है. उनको पता है वो सही है या गलत है. और अगर आप आपके अंतरात्मा की सुनोगे, आपको पता चल जाएगा वो गलत है. अगर वो करना आप बंद कर देंगे तो आपकी डेवलपमेंट के लिए ये सही है, आपके फ्यूचर के लिए ये सही है. दिस इज हाउ वी प्रेजेंट आवर स्पिरिचुअल पाथ टू the management and the employees. And equanimity, of course, it keeps coming again and again. जैसे एक हमारे भी basic sadhana में, when we finally talk about what should we do, there are only two elements, right? One, try to silence the mind and develop a certain stillness in the being, develop a certain equanimity. This is the first step. और ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है. जब किसी ने माँ से पूछा कि सुपरमैन के क्या क्वालिटीज होंगे, द फर्स्ट क्वालिटी शी टॉक्ड अबाउट वाज इक्वानिमिटी. तो ये इंफ्रामैन से लेके वो सुपरमैन तक एक ही क्वालिटी है, इक्वानिमिटी. और अगर हमको थोड़ी बहुत होप है तो शायद उसी को पकड़ना पड़ेगा. तो एक है कि ये साइलेंस, एक स्टिलनेस, एक and again the stillness as a mental stillness, as a vital stillness. And the second part is listening to the psychic voice, the voice of the psychic being. दोनों यहीं पे आ जाते हैं. This is a slide that is as good for our sadhana as it is for anyone outside. Then comes the widening part. Widen the emotions, widen the mind, widen the actions, accepting a larger responsibility with a smile, expanding our quote unquote family, and some of the things relating to opening our being to a wider stance. Slowly, how do we open to a wider stance? And then, of course, the heightening part, the silence, the peace is the next step. The capacity of the human mind is, from the chaos of the fish market, how do we take it further? And then equanimity. What is equanimity? It means a quiet, unmoved mind and emotions. Again, words of Sri Aurobindo. Then we talk about some of the other themes, how each of us, our life is designed for spiritual development, to ideal spiritual development, and how spiritual life is not about achieving goals, but it is about continuing the effort. Spiritual life is effort-oriented, it is not goal-oriented. And we point out that in corporate world and in private sector or public sector, goal orientation is very important. But for growth, spiritual growth, the effort and regularity are far more important. So that kind of gives us the first half of how we are talking about the leadership and how we are trying to give an idea of what the inner awareness part. And we talk about going further. So this covered self-observation and self-awareness. Then the question is, how do we go further into development, mastery, and transformation? There are similar slide decks that are available. But what I will do is I will not walk you through all of this. I will just stop here for maybe 5 minutes or so for any questions or any thoughts that you wish to share. And then I will share with you for another 15 minutes how we talked about wisdom, force, harmony, and perfection
as the 4 aspects of management for the corporate world. Anyone wishes to share anything? किसी का कोई प्रश्न हो या कोई जोड़ना चाहती हो तो उसको ले सकते हो लोग। सुबोध जी। नमस्ते, जय श्री मां। एक प्रश्न है छोटा सा जी। अभी आपने जैसे स्लाइड में बताया था कि एफर्ट्स ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ, और कल भी हम बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी कर्म के थ्रू। तो प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जब हम काम करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में स्पिरिचुअल मेंटेलिटी के लोग मिलना ये बहुत टफ होता है। वो ऑलवेज दैट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, और एक उसका बिल्कुल ही अप्रोच अलग होता है। तो उस केस में हाउ वी कैन एडजस्ट? What we talk to them here is 2 aspects. The outer aspect of work and delivery and timeline and deadline, that aspect we continue to emphasize that we will try and abide by it as far as possible and bring perfection into that element of working. This is one aspect. The second aspect, when we talk about effort-oriented versus goal-oriented, what we point out is that when we talk of, let us say, a team comes to do this journey of spiritual development, what we try to emphasize here is that the team should give adequate time support to the individual who is trying to make progress without expecting results of a change of nature in a time-bound manner. The idea is कि अगर हम एंगर पे काम करना शुरू करते हैं, then expecting the person to change within a very short duration is unrealistic. So we expect that the team supports the person for a longer period of time. Now, I had done a similar session for a set of our college students. And I had done a basic workshop, and next year I was invited to do an advanced workshop. What was very interesting was when I went for the advanced workshop and I was talking to the team, to the group, sir, this particular person has really worked very hard on her anger control. The group was actually coming to point out that आप 6 महीने पहले आए थे और ये सब आप कह के गए थे. We have taken it up as a team, and here is somebody who is working hard on this. Even that recognition goes a long way in changing the dynamics of a team. As a manager or as a senior leader, where it affects over a period of time is a certain sense of accommodation, that even the deadlines and timelines, while they're important, they're also not so important that we have to disturb a person to a significant degree. But that comes only with mature managers. Right. Like मेरा ही एक example था जहाँ one of my employees was on a honeymoon, and the customer was shouting that he wanted something to be addressed immediately, and हमारे sales वाले phone पे लग गए, बुला दो उसको honeymoon से वापस. And I tried to explain to them कि it is not necessary, we will try to send some other resources, hold the 4-5 दिन में लड़का आ जाएगा, तब तक आप, it is your job to handle the customer. And we kind of managed it. We didn't disturb people in a way, because we know that there is a certain balance that is required in all of this. So a collective journey hai ye, and sometimes it works, sometimes we fail. Right, sir. And only spiritual people can understand this. But I believe this session is very, very nice, at least for corporate people to connect with spirituality. So once I will have recording, I will pass on this to my some colleague,
they sometimes wants to know or want to get in touch with the spirituality, but they don't have time and all. They don't have even, I felt that they don't have even interest to read all these things and to go on this path. But this is very nice session, at least for the people who are working in corporate. Wonderful. Thank you. Thank you, Subodhji. किसी को और कुछ पूछना या जोड़ना है ये जो अभी तक का सत्र हुआ है उसमें? एनी वन ऑफ यू? अपर्णा दीदी प्रकट हुई थी थोड़ी देर के लिए। यही हूँ नमस्ते भैया। नमस्ते दी। अपर्णा दीदी बहुआयामी व्यस्तताओं में है आजकल, एक साथ कई काम कर रही हैं। मल्टीटास्किंग। बहुत सारे इसलिए वीडियो ज्यादातर ऑफ रखना पड़ता है मुझे, माफी चाहती हूँ। मैं surely understand. पर भैया बहुत अच्छा लग रहा है कैसे लोगों तक ये सब बातें हम लोग पहुंचाएं, ये सच में कितना जरूरी है। दिल्ली में आइए आप। जरूर दी, जरूर। कब आ रहे हैं दिल्ली? अगस्त में? अभी तो शायद दर्शन तक मैं हैदराबाद से नहीं हिलूंगा शायद। क्यों? 10 तारीख के बाद तो आपको होना चाहिए यहाँ। Let us see। यहाँ पे भी 150th के लिए काफी काम चल रहा है दी। हाँ वो तो है, पर प्लीज 10 से 15 तक हमें चाहिए ना, आप जैसों की जरूरत है। मेरी तरफ मेरी रिक्वेस्ट है, आगे देखिए। आगे हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे इंटीग्रल मैनेजमेंट पे दिल्ली आश्रम में फिजिकल। हाँ हाँ भैया, तो मनोज भैया इनको छोड़िए मत, इनको खींच लाइए। हम इनको छोड़ देंगे, हमको नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। It will be a joy. It will be a great day कि वहाँ हम लोग इंटीग्रल मैनेजमेंट पे वहाँ करें दिल्ली आश्रम में, और बहुत सारे जो इस विषय को लोग जानना चाहते हैं उनको अवसर मिलेगा। हम लोग उस विषय में जरूर प्लान करेंगे। So can we take up the second part? Yes, we'll take up the second part. It is a short section. I just want to highlight to our audience कि किस तरह से हम we are trying to bring in the 4 powers जो श्री अरविंद the Mother किताब में लिखे हैं. So I will try to quickly go over that in so that we get an idea. Just give me a minute. Here, I'll just share the screen. So आगे बढ़ते हैं हम मास्टरी और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। How do we make inner progress? अभी तक इनर अवेयरनेस की बात की थी। धीरे धीरे how do we do the development, mastery and transformation? Quickly I will the development part, there is a basic level, there is an intermediate level, and there is an advanced level. Observation and detachment and control, we have already seen this, learning to go inside. Intermediate level, how do we develop a certain element of discrimination and willpower, aspiring for something better,
self-restraint and self-control, and acceptance of where we are and how do we go forward. Sometimes a part of self-development is also realizing that achieving a goal at all costs may have a very heavy cost with it. And this is where we have to be careful. Sometimes this balance is something that has to be brought into the management level, where maybe sometimes we miss a deadline, but there may be a larger harmony achieved in the process. We can't control everything, and the essence of a lot of disharmony is the need to control. So we kind of point this out with some examples, and then at the advanced level, we talk about having a base of silence and peace inside and learning to control yourself and not as much the others and circumstances. And this gets to really an advanced level. This is not something people are prepared for. When we have discussions and we say that ego and desire are the root of all problems and try to overcome the ego, people are confused. And there's a lot of debate that happens when we do this. Without ego, you can't survive in the corporate world. Without having a deadline, how will you be able to function? These kind of things. And we also have discussion on the basic theme of Karma Yoga, Karmanyevadhikarasya. What does it mean? Can we say that I don't expect results, so I won't meet the deadlines, just as the question just came up right now. So these are very interesting discussions that we have. And to what extent? Because obviously none of these can be extended for too long. We have to figure out what is the range of operation in which each of these principles is effective. And we have to learn to do that, and it comes with a certain development, a certain maturity. And now we are talking about a mastery and transformation, which is only possible if you have committed yourself to a spiritual life. If spirituality doesn't mean anything to you, then this is not a slide that can be meaningful. Ego and desire need to be left into the background, and एक detached attachment वाली approach लाना जरूरी है इस काम में. And dynamic silence, where there is an inaction in action, जैसे गीता कहती है. While we are doing crazy work, we are still able to have a certain part of ourselves step back. I mean, I don't want to use terms जो हम आध्यात्मिक realm में use करते हैं, जो probably it is relevant here, the separation of the Purusha and the Prakriti. How do we manage that? And as we work on it, the consciousness begins to support new behavior. I'll just step back and I will share with you one of the experiences we have had when we talked about doing this work. We did a project with a university for their faculty. And when we did integral education for the faculty, before we actually talked about integral education in the classroom, we almost did a 6-week course on inner transformation for the faculty themselves. When you read integral education literature of Mother and Sri Aurobindo, they talk extensively about, first of all, the science of living, understanding ourselves. And unless we do that in a very detailed way, and we gave them workshops, meditations, all of these, and then we got into the curriculum itself. So the same thing applies here. Till the person is willing to change, we have to wait. And in 10 people, maybe 2 or 3 are ready. Maybe 2 or 3 are not. Or 1 or 2 may even think it's absolutely irrelevant. When we shared, similar experiences with one of the colleges, it was very interesting. हमारा ये workshop करने के time पे, there was a very strong reaction from one of the boys. Again, 25-year-old boy, quite mature, but he did not like one bit
of all this spiritual substance we were trying to say, and he was also very disruptive in the class. 7 years later, he came back to the dean who conducted this program and said, "Madam, आपने वो चीजें क्यों समझाई थी हमको? आज मुझे समझ में आ रहा है." क्योंकि एक स्टूडेंट होने के टाइम पे हम प्रोटेक्टेड होते हैं, हमको चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम बाहर दुनिया जाके काम करना शुरू करते हैं, लोगों के साथ डील करना शुरू करते हैं, तो हमारी एक्सपीरियंसेस अलग हो जाती है, और तब हमको समझ में आया कि आपने ये सब क्यों किया, हमारा क्यों कोर्सेस हमको क्यों दिलाई आप. So this is how some of these things work, that people may be ready. Sometimes we have to wait for people to get ready. So this is self-mastery. And then we talk about self-transformation. By the way, आजकल management theory में transformational leadership or leadership through self-transformation, this is a big buzzword. There's a lot of literature that is coming up. So we talk to people about how there are 4 elements: a calm vision, strength, harmony inner and outer, perfection inner and outer. लीडरशिप बाय कॉन्शियसनेस ये बनता है जब ये चारों चीजें जुड़ती हैं धीरे धीरे, और आंतरंगिक विकास होता है. And then, you understand, most of you know these things. A calm vision, you have to think long term, have a certain element of tranquility. It derives a certain strength from knowledge, detached yet firm. All of these things are related to the Maheshwari aspect. Then strength, inner battles and outer battles are realities of life. How do you work on inner and outer strength? Then harmony, Sri Aurobindo's quotation that all problems of existence are essentially problems of harmony. So how do you develop a certain collaboration? How do you develop a certain joy? How do you synthesize opposites so that in the team they become strengths? All of this is brought together in the harmony aspect. And similarly, in the perfection aspect, how do we have skillful execution, attention to detail, perpetual progress, perpetual progressive perfection? How do we make it happen? In fact, I'm also happy to share with you that one of my friends, who is again a devotee of Mother and Sri Aurobindo, he actually identified the Sri Aurobindo, the Mother ke section mein, in Maheshwari section, he talks about 7 or 10 or 15 words. He identified those keywords. Similarly, Mahakali, and then he did a survey in a proper corporate environment as to how do employees rate their leaders in wisdom, strength, harmony, and perfection. And he had some very interesting results. So many of you will be happy to know that so much work is happening in the field of management when we are talking about management by consciousness. So I'll just share with you a couple of more things of how we present it to people. So we talked about all of this, you're already aware. Self-observation, self-awareness, self-development, self-mastery, and self-transformation. This is how the thing is. It starts with observing and becoming aware of physical, vital, and mental. Transformation comes when you're able to bring vision, strength, harmony, and perfection. So it is a long journey. Step by step, we are able to go forward. It is not a journey of a 2-hour session or a 1-day session or even a 1-week workshop. We all know this is a very long journey. And then we talk about how this helps. Why is transformational leadership important? Why is management by consciousness important? We talk about the benefits to the organization, that when the employees go to a higher level of consciousness, अंदर एक स्थिरता, मानसिक स्थिरता रहती है, एक calmness रहती है, एक प्रशांत वातावरण, inner self बहुत calm रहता है. Then naturally the outer self, there is happiness, there is harmony, there is a better working environment, and then there is a productive organization. So this is how we identify the key elements of how a
leadership by consciousness helps improve the environment and gives you a higher productivity. So this is how we talk about it. And of course, this is a very famous quotation of the mother. We have, every one of us, a role to fulfill, a work to do, a place which we alone can occupy. So this is broadly the journey of management by consciousness. Just wanted to share all of this with you, and Manoj Bhai approached me. The idea was that many of you will become aware of what is the work that we are doing and how we can use it and how we can take it forward. I leave it to you. So with that, I think, Manoj Bhai, I hand it over to you. थैंक यू भैया, ये सचमुच बहुत अच्छे से आपने सारे विषय को रखा है और हम लोगों का भी ये प्रयास है कि इसी तरह जो है हमारे पास अलग अलग विषयों के जो विद्वान स्पीकर्स हैं वो आए और यहाँ ऑनलाइन जो भी संभव हम लोग को सीखने को मिल सकता है उसमें हम लोग सीखें। श्रीमान ने स्वयं जो ट्रू लीडरशिप है, सच्चा नेता, उसके बनने की अलग अलग जगह कुछ राइटिंग्स में जो उन्होंने बातें कही हैं उसमें से अधिकांश बातें जो है वो आपने इसमें बहुत सुंदरता के साथ ली हैं और किस तरीके से शुरुआती वार्ता में आपने अपने मस्तिष्क को, माइंड को कंट्रोल करने के बारे में जो बातें की, ऑब्जर्वेशन, डिटैचमेंट और फिर कंट्रोल, और उसमें भी जो है शुरू से एक शब्द जो बार बार आया, इक्वालिटी, समता, तो वो निरंतर चलने वाला एक प्रयास है। कई बार समता बहुत लंबे समय तक हम लोग बनाए रखते हैं और अचानक किसी एक घड़ी में वो छूट जाती है, पर निराश होने की बात नहीं है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो लगातार प्रयास से चलती रहती है। पर ये जो विषय आपने आज लिया है इसके माध्यम से मुझे लगता है कि ये भ्रांति लोगों में जो अगर अध्यात्म को लेकर हो या कम से कम श्री अरविंद को दर्शन को लेकर हो कि ये संसार छोड़ने का या काम काज से दूर हटने का योग है, तो वैसा आज स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि पूर्णता की दिशा में प्रयास करते हुए, हार्मोनी बनाए रखते हुए और भी अच्छा हम कर सके इसकी अभिप्सा निरंतर जो हमारी एस्पिरेशन हो, तो ये तीनों चीजें आवश्यक है। फिर उसके बाद आपने जो है वो स्पिरिचुअल सेल्फ के बारे में बात की, जिसमें 3 हिस्से थे, हाइटनिंग, डीपनिंग और वाइडनिंग। उसके बारे में भी बहुत अच्छे से आज की तो स्लाइड से जो है वो एकदम संग्रह करने लायक है। फिर आपने आगे जाकर जो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के विषय में बताया। फिर सेल्फ मास्टरी से होते हुए सारी यात्रा को आप ले गए और उसके भी पहले जो आपने व्यक्तित्व विकास के बहुत सारे पहलुओं को यहाँ पे छुआ है, जिसमें एक सबसे पहले तो आपने बताया था स्टाइल्स में कि कौन कौन सी जो है वो होती है, जिसमें आपने बताया कि अथॉरिटेटिव होती है, कोचिंग वाली होती है, और दूसरा जो होता है वो कोहेसिव टाइप की होती है, जो अब जबरदस्ती किसी को दबा के काम कराना चाहते हैं। सारे बिंदुओं को यदि कोई व्यक्ति इसको सुने, और सबसे आश्चर्य की बात ये हुई कि जो आपने बताया कि 8.25 सेकेंड्स होता है जिसमें एक व्यक्ति जो है फोकस करके सुन सकता है। पर मुझे लगता है कि आपके जैसे अगर वक्ता होंगे तो लोगों को धीरे धीरे ये जो 8.25 का टाइम है ये निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगा, हम फोकस कर सकते हैं। श्री माता जी ने बहुत ही सरल भाषा में ट्रू लीडरशिप के विषय में कुछ बिंदु दिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो अलग अलग उन्होंने अपनी राइटिंग्स में बोला है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु वो बोलती हैं, सच्चा नेता बनने की शर्तों में पहली शर्त है अपने आप को भूल जाना। अगर आप निरंतर अपने विषय में सचेतन रहेंगे और इस विषय में सचेतन रहेंगे कि मैं कैसा नेता हूँ, आंतरिक रूप से स्वयं को परफेक्ट बनाने का प्रयास करना एक अलग बात है, लेकिन अगर हम उस प्रयास में ही लगे रहें कि जो है स्वयं को ना भूल पाए, तो फिर वो टीम को ले चलने में उसमें बहुत मदद नहीं मिलती।
और दूसरा माँ एक जगह बताती है कि ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक ही शक्ति है जो सब जगह कार्यरत है और वही हम में और हमारी टीम में भी कार्य कर रही है। फिर तीसरा बिंदु तो भैया ने बहुत सुंदरता से लिया है कि सच्चा और जागरूक रहना, और चौथा है अपनी दुर्बलताओं को पहचानना। ऑब्जर्वेशन का जब वो बात कर रहे थे तो हमारे क्या नेगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं उसके ऊपर काम करना। फिर एक बिंदु और है जिससे भैया ने डराइव किया होगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, और माँ इसमें बहुत ही कैटेगोरिकली बोलती हैं। माँ ने कहा दूसरों पर नियंत्रण रख सकने के लिए स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण रखना अनिवार्य शर्त है। अगर आप दूसरों पे नियंत्रण रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखें। और ये मैं बहुत बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस या सरकारी ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ। घरों में सामान्यतः ये होता है कि वे सारे बुजुर्ग, वे सारे बड़े लोग जो बच्चों को बोलते हैं कि एक्सेसिव यूज से बचो मोबाइल के या सोशल मीडिया के, वो सबसे ज्यादा झमेले में वही इसमें रहते हैं। तो यार सेम फॉर वाचिंग टेलीविजन और न्यूज चैनल्स एक्सेट्रा। एट द एंड ऑफ द डे सोते समय जब हम सोचते हैं आज हमने इतना समय टीवी में बिताया या व्हाट्सएप पे बिताया, तो ऐसा क्या नया हमने सीखा। और मुझे लगता है अधिकांश लोगों के हाथ खाली ही होते होंगे कि आज 3-4 घंटे सोशल मीडिया पे और 2-3 घंटे चैनल के ऊपर डिबेट में किया। तो डिबेट में बैठने वाले स्वयं एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते, तो हम उनसे कैसे सहमत हो पाएंगे। और उसकी जरूरत भी नहीं है, हम लोगों का अपना सोच अपना काम है। फिर मदर ने एक और ऑब्जर्वेशन किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूर्णतः सच्चा होना ये भी एक अनिवार्य शर्त है। और उसमें माँ कहती है कि पूरी तरह सच्चे होने के लिए ये आवश्यक है कि तुम्हारी कोई भी पसंद, कोई भी कामना, कोई भी आकर्षण, कोई भी नापसंद, कोई भी सहानुभूति, कोई भी विद्वेष, कोई भी आसक्ति या कोई भी विकर्षण, विकर्षण मीन्स जो हमारी आसक्ति है उसका विपरीत, ये वीतराग जो कहते हैं हम लोग कि ना हम किसी से जुड़े हैं ना किसी से हम अलग हैं, और सबके भीतर एक ही शक्ति का संचालन देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो माँ ने बहुत ही सरल भाषा में श्री मातृवाणी में कहे, और उसमें से अधिकांश बिंदुओं को आज हमने यहाँ देखा कि भैया ने इसमें बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। और मैं ये प्रयास करूंगा कि आगे भी जब भी संभव होगा तो श्रीनिवास जी को ऐसे विषयों पर, क्योंकि उन्होंने दोनों तरह का जीवन में काम करने का मौका मिला है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी और हमारी आध्यात्मिक संस्था में तो अभी लगे ही हुए हैं। तो बहुत सरलता से जो उन्होंने बताया कि कई बार भी देखते हैं कि सामाजिक संगठनों को ज्यादा सीखने की जरूरत है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ जो है टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखा जाता है, टारगेट ओरिएंटेड काम करने की बात होती है। और ये कई बार हम ऐसा देख लेते हैं कि जो हमारे स्वयं के जो संस्थान है उसमें ये देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये ठीक बात है, पर इसके साथ साथ सामाजिक सरोकारों को काम करने के जो संगठन है उनके पॉजिटिव तो है ही, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनमें कुछ पॉजिटिव नहीं है, पर वे यदि कॉर्पोरेट जगत से कुछ सीख सके तो शायद उनकी जो काम करने की जो कुशलता है वो और बढ़ जाएगी। और अंततः कहते ही हैं योगः कर्मेषु कौशलम, तो वो हमारा कौशल जैसे जैसे बढ़ेगा और जहां से भी हमें सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए। सो विद दिस हम्बल नोट मैं एक बार फिर आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप में से यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ मुक्ता जी हैं वो यूनाइटेड स्टेट में है, वहां से हैं, यहाँ से भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अपर्णा दीदी दिल्ली आश्रम से। कोई भी यदि अपनी इसमें कोई वैल्यू एडिशन करना चाहता है, बोलना चाहता है, तो हमारे पास थोड़ा सा समय है, अदरवाइज हम लोग फिर इसको वाइंड अप करेंगे। और उसके पहले मैं अपर्णा दीदी से जरूर निवेदन करूंगा कि अगली बार वो जो क्या कार्यक्रम है उसके विषय में श्री अरविंद के रचना कर्म के ऊपर यदि बात हुई है तो उस वक्ता के विषय में बताएंगे, ताकि फिर नेक्स्ट संडे तक के लिए हम लोग फिर से यहाँ से विदा लेंगे। सो पहले यदि कोई इसमें बोलना चाहता है तो अपनी राय रख सकता है, अदरवाइज आई विल हैंड ओवर इट टू अपर्णा दीदी। थैंक यू।
पांडे जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपनी दुर्बलता सर जी अपने से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, वो जी दूसरे शायद बता सकते हो। जैसा हम लोग को अब तक पढ़ाया गया था, उसको कैसे जानेंगे? अपनी दुर्बलता अपने नहीं पकड़ पाते हैं सर। तो आपने सुना ना होगा, कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। 2-4 निंदक अपने आसपास रख ना लीजिएगा। हमारे यहाँ यही ना कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जी जी जी। तो आजकल रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही आपके चारों तरफ रहते हैं। आप अच्छे काम कीजिएगा, वो आपकी कमियां बताते जाएंगे। बट कीप ऑन डूइंग गुड थिंग्स। पर अंततः तो जो है हमें स्वयं को ही ऑब्जर्व करना होगा। कोई जी। व्यक्ति और बताए और उनके शब्दों से हमें चोट पहुंचे, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे। नवजात जी तो कहा करते थे कि हाफ एन आवर विद द डिवाइन। सुबह के समय या जब भी आपको समय मिलता है, जस्ट स्पेंड 30 मिनट्स विद द डिवाइन फोर्स, और उनके साथ एक सखा के रूप में आप जो सारी बातें कह सकते हैं, भगवान के रूप में कहने में, पिता के रूप में कहने में कई बार बहुत सारी चीजें रहती हैं। यहाँ तक कि हम लोग जो है अपने जीवन साथी से बहुत चीजें नहीं कह पाते, पर एक मित्र से कहते हैं कि अर्जुन का सबसे अच्छा क्वालिफिकेशन ये था कि अन्य चीजों के अलावा वो भगवान का मित्र भी थे। तो इसलिए मित्रता के साथ हम भगवान से सब बात कहेंगे तो वो भी कुछ कुछ किसी न किसी माध्यम से बताते रहेंगे। बट अपनी कमियों पे भी बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक नजर रखना चाहिए कि मैं कहीं आउटराइट तो कुछ गलत नहीं होता जा रहा है। अदरवाइज आप पॉजिटिव्स के ऊपर रखेंगे, जैसे माँ कहा करती थी, तो फिर बात बनती जाती है। ऐसा मेरा सोचना है। और कुछ और श्रीनिवास भैया इसमें जोड़ना चाहेंगे तो जरूर जोड़ेंगे। आपने बहुत अच्छे से सब चीजें समेट कर बताई है। मुझे तो दो चीजें इसमें भैया और लगती हैं। एक तो एस्पिरेशन फॉर हार्मोनी। आप अगर ट्रू लीडरशिप आप स्वयं डेवलप करना चाहते हैं अपने संगठन में, या कि अपने घर में यदि आप समरसता रखना चाहते हैं, सामंजस्य, हार्मोनी बोलते हैं, तो सबसे पहले तो माँ कहती हैं कि तुमको इसकी बहुत प्रबल इच्छा होना चाहिए। यू शुड एस्पायर फॉर इट। कुछ भी चीज नहीं होती। किसी ने माँ से कहा, माँ के सामने जब बात हुई कि हमको प्रेयर करना चाहिए, तो किसी ने कहा कि मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आती माँ, हाउ टू प्रे। तो माँ ने कहा ठीक है, फिर तो तुम्हें पहले दिन की प्रार्थना का विषय मिल गया। भगवान से कहो कि मुझे सिखाओ कि प्रार्थना कैसे करते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग जो हमारे भीतर स्वयं चलते रहते हैं, हम स्वयं ही अपने लिए, अपने आंतरिक जगत के लिए समय निकालें और दिनचर्या पे थोड़ा ध्यान दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। और अब अपर्णा जी पूरी तरह से जो है वो दर्शन देने के लिए प्रकट हो गई हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगले रविवार का जो कार्यक्रम है उसके विषय में वो बताएंगे। उसके पहले मैं जो सारे हमारे यहाँ गणमान्य आज सुनने के लिए इस कार्यक्रम को आए हैं, 2 दिन में आए, परम स्नेही श्रीनिवास जी और श्री अरुण नायक जी, दोनों लोगों का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि माँ के इस विचार यज्ञ में जो दिल्ली आश्रम और श्री अरविंद सोसाइटी ने आयोजित किया, उसमें आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और विस्तार के साथ चीजों को रखा है। सो अब मैं अपर्णा दीदी को हैंड ओवर करता हूँ, वो बताएंगे अगले कार्यक्रम के विषय में। पता नहीं रचना करते हैं हम लोग अगली बार, क्योंकि सारा ये कार्यक्रम आप ही के पास ज्यादा अच्छी तरह से आयोजित है। हाँ, श्री अरविंद के रचना कर्म के ऊपर आगामी रविवार को कार्यक्रम होगा। समय यही रहेगा 4 बजे से 5 बजे तक। और उसके विषय में हम लोग जो है उसका कौन सा श्री अरविंद का जो ग्रंथ है, कौन सी उसके वक्ता रहेंगे, वो सब हम लोग समय से आपको पोस्टर बना के सूचना दे देंगे। मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो है समय से अगली बार फिर पधारें। कुछ और दीदी सूचना दे रही है? नहीं भैया, बस यही था। मैम मुझे लग रहा था रचना कर्मी है, पर हमारे कई परिवर्तन हुए तो इसलिए मैं निश्चित नहीं थी। धन्यवाद, आपने बता दिया। हाँ नहीं, अब जो है सुनाई नहीं भैया, फिर से बोलिए।
श्री अरविंद का जन्मदिन अब बिल्कुल पास में आ रहा है और हम सबके भीतर भी वो अब स्पंदन बहुत तेजी से आने लगे हैं। तो सब अपने अपने सेंटर में, ब्रांचेज में तैयारी में लगे, अपनी आंतरिक तैयारी में। ये विशेष समय है। भागवत मुहूर्त में भगवान स्वयं कहते हैं कि एक भी काल होते हैं जब भगवान अपने आप को बिल्कुल हमारे नजदीक ले आते हैं, और उसका भी अभी ये गोल्डन मोमेंट है। हम सब लोग जो अभी धरती पर है, ईश्वर करे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो और श्री अरविंद के जब 200 वर्ष होंगे, 250 वर्ष होंगे, पर अधिकांश लोग, मैं ऐसा मानता हूं कि ये ऐसा समय है हमारे जीवन का कि जो ये 150 जब श्री अरविंद के पूर्ण होंगे तो हम यहाँ पर हैं, उसको हम कैसे अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने इस पृथ्वी के लिए स्मरणीय बना सकते हैं, उसमें पूरे मनोयोग से हम सबको लगना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से एक बार सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मोनिका जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। वे एकदम साइलेंट वॉरियर की तरह जो है पीछे रहकर सब काम संभालती हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो फिर से श्री माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन हम लोग कर सकें। उसके लिए श्री मात्र संगीत चलाएंगे, फिर हम लोग इसको यहाँ से विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय माँ।